Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In the previous class of class 11th political science, we were reading judiciary, the chart of judiciary. What are the functions of and what is the jurisdiction of Supreme Court of India? We read through the chart. Now we will discuss in the deep analysis of this particular jurisdictions of Supreme Court. The very first one is the original jurisdiction. Original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that. Means some are the cases that are directly or exclusively dealt by whom? By the Supreme Court of India. From the diagram above, you will notice that the case involving federal relation go directly to the Supreme Court. Means if there is any case regarding dispute with the union government or state government versus different other state government, or group of state governments with the union, or the group of state governments with the states. So these cases will be directly dealt by whom? By the Supreme Court of India. The original jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all dispute regarding federal matters. The Supreme Court functions as an umpire. What an umpire do? They try to resolve, they try to give decision regarding any dispute. So in this case, if there is any conflict between the union government as well as with the state government, it will be directly dealt by Supreme Court of India, and the Supreme Court will function like an umpire. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and states. In any federal country, not only in India, if you compare with any other federal country, these are the natural things that there is some kind of legal dispute between the union as well as the states government among states themselves. The power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India, and in India there is only one authority which can resolve such conflict or dispute between the state as well as with the union, and the Supreme Court deal with these matters. It is called the original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with such cases. Means they are the sole authority who can deal with such cases, and no one else having such kind of authority or jurisdiction. Neither the high courts nor the lower courts can deal with such cases. In this capacity, the Supreme Court not just settles dispute but also interprets the power of union and the state government as laid down in the constitution. In most of the cases, the thing which cause dispute is what are the powers of union and what are the powers of state government. So basically here, in such case of any kind of conflict, the Supreme Court derives or Supreme Court gives the meaning of what are the power of union and state government regarding the constitution. Whatever the provisions or clauses given in the constitution, the Supreme Court give the meaning of those provisions and clauses, that what are the powers of the union and what are the powers of state governments. So this was the original jurisdiction. Now next thing is writ jurisdiction. What is writ? Writ are the legal orders by the Supreme Court as well as high courts at the given in the context of, in the purview of whom? In the purview of fundamental rights violation. So as you have already studied in the chapter of fundamental rights, any individual whose fundamental right has been violated can directly move to the Supreme Court for remedy. That's why the Article 32 is also known as right to constitutional remedies. That means if you are being deprived or your fundamental rights are being violated by any institute of the government or as well as the private firms, you can directly approach to the Supreme Court as well as the High Court. In that scenario, whatever the directions the Supreme Court gives, it gives in the form of writs. Now we will see in the next line, the Supreme Court can give special orders in the form of writs. So the Supreme Court can give special orders in the form of writs. What are the special orders given by the Supreme Court in the case of fundamental right violation? These orders are known as writs. The High Court can also issue it, but the person whose rights are violated have the choice of
either approaching the High Court or the Supreme Court directly. That means you have the option, whosoever feeling deprived of fundamental rights or they think their fundamental rights are being violated, they have the option that they can approach either High Court or Supreme Court. Through such writs, the court can give orders to the executive to act or not to act in particular way. So, through these particular writs, the court orders to whom? The executive organ of the government to whether to act or not to act in each and every scenario. Means sometimes they have to act and sometimes they have not to act. कभी कभी ये अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं. इन दो सिचुएशन द कोर्ट ऑर्डर्स दैट दे शुड नॉट एक्ट लाइक दैट. उनको ऐसा एक्ट नहीं करना है. सो इट इज़ टोटल डिपेंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट दैट दे व्हेन दे गिव रिट टू एनी पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, they have to act or not to act in a particular way. Next is appellate jurisdiction. What is appeal? Appellate means when you are not satisfied with such verdict or judgment of any subordinate court or local court, in that case you can approach or you can knock on the door of the apex court or the Supreme Court of the India. Not only Supreme Court, even to the high courts. So the Supreme Court is the highest court of appeal. Means after that Supreme Court you cannot approach to any further court. ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए तो आप पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि हमको यहाँ न्याय नहीं मिला, हमको वहाँ न्याय मिलेगा. और इन सच केस अगर लेटेस्ट एज्यूम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी अगर आपको नहीं मिला न्याय, तो ऐसा नहीं कि आप मंगल ग्रह पे जाके न्याय मांगने जाएंगे. आपको यहीं रहना है. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट. इसकी आगे कोई लाइन नहीं है. So, in India the Supreme Court is the highest court of appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decisions of the High Court, and you can approach to the Supreme Court on the basis of appeal only when you are not satisfied with the verdict or the judgment of the High Court. That means if you are having any kind of verdict from the local court, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको कोई डिसीजन मिला, आप उससे हैप्पी नहीं है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे. आपको एक चैनल, प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना है. आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू हैव टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट, एंड इफ देन ऑल्सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, देन यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली. यू कैन नॉट डायरेक्टली गो आफ्टर द डिसीजन ऑफ लोकल कोर्ट. हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील, एंड इवन द हाई कोर्ट विल सर्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर केस इज फिट फॉर अगेन री अपील. हाई कोर्ट आपको बताएगा कि ये केस अपील के लायक है भी कि नहीं, कि बस आप लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं बस अपने नेम सेक के लिए या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए. दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. जब किसी पर्टिकुलर केस में सीरियस मैटर हो इंटरप्रिटेशन का लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशन की, इन दैट केस ओनली द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट इज फिट फॉर अपील. अदरवाइज हाई कोर्ट डज नॉट सर्टिफाई इट. In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made for the High Court or Supreme Court. और कभी ऐसा केस हुआ कि किसी क्रिमिनल केस में किसी लोअर कोर्ट ने किसी को जजमेंट दिया दैट यू आर गोइंग टू बी हैंग टिल डेथ, आपको फांसी की सजा मिलेगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती. इन सच केस अ पर्सन कैन डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जान की बात है, फंडामेंटल राइट्स वाली बात हो जाती है, राइट टू लाइफ वाली बात आ जाती है. Of course, the Supreme Court holds the powers to decide whether to admit appeals even when appeal is not allowed by the High Court. और ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डिसाइड करने का कि वो अपील को अपने यहाँ एक्सेप्ट करता है कि नहीं. इवन जो अपील है वो नहीं अलाउ की गई है कहाँ से, हाई कोर्ट से. अगर हाई कोर्ट किसी चीज़ को डिसमिस कर देता है कि इट इज़ नॉट फिट टू बी री अपील्ड, उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के ऊपर है, उनके अपने कंसेंट के ऊपर है कि वेदर दे विल अलाउ इट और नॉट. अपीलेट जुडिक्शन मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इशूज इन्वॉल्व इन इट.
If the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give a new interpretation of provisions involved. अगर किसी लोकल कोर्ट द्वारा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग रूलिंग आ गई, मीन्स उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आ गया, जजमेंट आ गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस रूलिंग को तो चेंज करेगा ही, जजमेंट को तो चेंज करेगा ही साथ नया इंटरप्रिटेशन देगा उस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स टू हैव एपीलेट जुरिडिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम। ये मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट्स के पास भी एपीलेट जुरिडिक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है खुला हुआ है। नाउ दे कैन अलाउ द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे आती हैं, उनके जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट भी वो अपील एक्सेप्ट करते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द एडवाइजरी जुरिडिक्शन। That's all for today, students. I think you understand the concept very well. Thank you so much. Thank you.